So, Beta, this is chapter number 8, safety and security. And in this chapter, we are going to learn about the physical safety issues, e-safety issues that include your Data Protection Act, your personal and sensitive data, e-safety when using internet, and your data security as well. अब right into this chapter हमारे पास सबसे पहले है फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी पे हमारे पास सबसे पहले तो फिजिकल सेफ्टी से वो सारे डिफरेंट इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं दैट कैन पोज अ थ्रेट टू माय हेल्थ रिस्क विच मींस आई माइट गेट हर्ट these all types of areas come under your physical safety while health safety is how to stop people becoming ill or being affected by daily contact with computer. Physical safety is mostly concerned with the dangers that could lead to serious injury as well. Okay, I'm just overviewing this. Into this regarding physical safety, what we have discussed is in our last class is the electrocution. That means that if you spill liquids and drinks onto any electrical equipment or you have exposed to wires or damage insulation or there is any electrical equipment that is unsafe or you have any unsafe electric wall socket. So that means that you might get into a risk of electrocution. What can be the preventive measures? Preventive measures such as do not allow drinks to be taken into computer room, check that all wires are properly insulated and check all the equipment is checked by the qualified electrician. Similarly, I have the fire hazard, tripping hazard and personal injury as well as we have quite discussed this in our last class. Fire hazard means that there is not any sort of fire eruption like overloaded wall sockets, overheating of computers. How can I prevent them? I can increase the number of wall sockets. I should not be covering my cooling vents. In your tripping hazards, it is about the damaged carpets and other flooring, and we can use the cable duct to make the fire safe. Personal injury is making use of heavy equipment that might fall onto you, or you might become unstable. We can use a stronger equipment or strong desk. We have already discussed this in today's class. I'm continuing with the 8.2. 8.2, which is the e-safety. So let's start this regarding the data protection. Most of the countries have some form of Data Protection Act, which is to be known as DPA. This is basically an example of a legislation or policies that are designed to protect individuals and to prevent incorrect or inaccurate data that is being stored. Essentially, they are set up to protect the rights of the individual so that your data is properly or lawfully processed. The data is being processed for that designated purpose only, or your data is obtained, stored, and processed lawfully. For example, collection, use, and disclosure, destruction, and holding of data. Any such act applies to both computerized and paper records. देखो, डेटा सेफ्टी के बारे में बात सिर्फ ये है कि मेरे पास जो भी मेरा डाटा है वो जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, वो सिर्फ उसी लिए आपके पास यूटिलाइज हो। ऐसा ना हो कि आप उस डाटा को पायरेट करके किसी और यूज़ के लिए आप यूज़ कर सको। ये सारे एक्ट्स आपके पास आ जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। दे आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट योर इंडिविजुअल्स to prevent incorrect और inaccurate data that is being stored. डीपीए का काम ही यही होता है कि वो एक इंडिविजुअल के राइट्स को एम्पावर करता है जिस तरह से आपका डेटा ऑब्टेन होता है, स्टोर होता है या प्रोसेस होता है। इसमें आपके पास डेटा की कलेक्शन, डेटा का यूज़, डेटा का डिस्क्लोजर या होल्डिंग ऑफ डेटा इज रिस्पॉन्सिबल।
मैनी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स आर बेस्ड ऑन 8 प्रिंसिपल्स। वो 8 प्रिंसिपल्स आपके पास कौन कौन से हैं, जिसमें ऑन राइट इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी दैट सम ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। जिसमें आपके पास जो सबसे फर्स्ट वाला है, सबसे फर्स्ट वन से दैट डेटा मस्ट बी फेयरली एंड लॉफुली प्रोसेस्ड। आपका जो डेटा है वो इट शुड बी फेयरली एंड लॉफुली प्रोसेस्ड, दैट मीन्स कोई भी अनलॉफुल या अनफेयर उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। डेटा कैन ओनली बी प्रोसेस्ड फॉर दैट स्टेटेड पर्पस। आपका डेटा सिर्फ उसी पर्पस के लिए जो है प्रोसेस होना चाहिए जिस पर्पस के लिए वो है। थर्ड सेज दैट डेटा मस्ट बी एडिक्वेट रेलेवेंट एंड नॉट डेटा। डेटा जो है आपके पास रेलिवेंट होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए है, और जितना डेटा को यूज़ करना है या जितने डेटा की क्वांटिटी अवेलेबल है उससे ज़्यादा एक्सेसिव स्टोर नहीं होना चाहिए। योर डेटा शुड बी एक्यूरेट। योर डेटा मस्ट नॉट बी केप्ट लॉन्गर देन नेसेसरी। ज़रूरत से ज़्यादा डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड इन अकॉर्डेंस विद डेटा सब्जेक्ट्स राइट्स। डेटा जो है उसके जो सब्जेक्ट के राइट्स हैं वो सिर्फ उसी के साथ चलना चाहिए। डेटा आपका सिक्योर होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम डेटा मस्ट नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर कंट्री। एक कंट्री का डेटा दूसरे कंट्री में ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए जब तक आपके पास उसकी कोई परमिशन ना हो। ये आपके पास कुछ नंबर ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन? Let me summarize this again. The first one says that your data must be fairly and lawfully processed. Data should be processed for that purpose. Data must be relevant. Data must be accurate. Data must not be kept longer than necessary. I hope it's clear. अच्छा, हमारे पास कुछ जनरल गाइडलाइंस भी है जिस तरह हम अपने डाटा को रोक सकते हैं किसी भी अनलॉफुल यूज से। और वो अनलॉफुल यूज्ड आपके पास किस तरह से, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि ये लॉफुल और अनलॉफुल क्या है। बेटा, लॉफुल वो जिसके कंट्री आपके लीगल लॉज या पॉलिसीज आपको परमिशन देते हैं कि आप इस तरह से अपने डाटा को यूटिलाइज कर सकते हो। अनलॉफुल चीज़ क्या है? जो जो आपके लिए यूज़ करना उस तरह से ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं कि सर इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि मैं कभी भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी भी आई विल नेवर एवर लीव देम lying on a desk when it is not attended. Do not leave personal information lying around on a desk when not attended. That means that whatever your personal information is, you should not leave it lying around on a desk when it is not, मतलब there is no one to attend that. इस तरह से नो वन इज एबल टू इंटरसेप्ट विद योर डेटा, बिकॉज अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल मौजूद है जो आपके डेटा की टेक केयर कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर डेटा एज वेल. So the first guideline says that you should not leave your personal information lying around anywhere without any person that's taking care of that. Second, it says that lock filling cabinets at the end of the day or when the room is unoccupied. You should lock your filing cabinets at the end of the day or when the room is unoccupied or when you are not there. Third says that do not leave data on a computer monitor if it is unattended. If अगर आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या चीज़ आप ओपन हुई हुई है आपके कंप्यूटर में, एंड इफ इट इज़ अनअटेंडेड यू शुड लॉग ऑफ योर कंप्यूटर इफ़ यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर टेस्ट फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, सो ताकि कोई और आता है तो उस डाटा को व्यू ना कर सके, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है. थर्ड says that you should be using your passwords and user IDs which should be kept secure, and password should be difficult to guess and break obviously, and should be changed frequently so that it makes you securer. Make sure that anything sent in an email or fax is not of a sensitive nature. ईमेल में या आपके पास फैक्स के अंदर कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो सेंसिटिव नेचर के अंदर हो. तो ये सारे कुछ आपके पास जनरल गाइडलाइन है जिस तरह आप अपने डेटा को रोक सकते हैं.
अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या है? Personal data 8.2.2. Now, what is your personal data? Personal data refers to any data that concerns a living person who can be identified from the data itself. Personal data can be referred to as like your name, your address, your ID card, your IP address, your cookie ID. मतलब जिस सारे डेटा से मैं किसी भी पर्सनल आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर सकूं, जैसे मेरे पास एक जगह नाम लिखा हुआ है लाइबा। अब नाम तो मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन वो मुझे किस आइडेंटिटी से मुझे रिकॉल करेगा? वो मुझे कॉल करेगा लाइबा की पर्सनालिटी से। सो पर्सनल डेटा refers to any data that is concerned about a living person who can be identified from the data itself or from the data in conjunction with other information. For example, Peter Smith के long purple hairs हैं and he lives at 40 Green Street. So this could be very clearly identified. Like for example, I can say that Laiba is a girl and she lives at this house and this street in this country. So it's pretty obvious, right, that I'm referring to the personal identity of you. So some examples of your personal data could be your name, address, ID number, passport number, IP address, cookie ID, advertising identifier on a mobile phone, your maybe your date of birth, or your banking details or your photographs as well. Some personal data is often referred to as a sensitive personal data, like, for example, ethnicity or a race, political views, membership of a political party, membership of a trade union. So they can be referred to as a personal data as well because they have the sensitive data in them. Medical history, genetics, extra special care has to be taken when I'm referring to sensitive personal data because when the data is personal or sensitive, it is obligatory that all precautions should be taken to keep it secure. It should not be passed to anyone. We should keep the data safe from hackers, but it also means that keeping that data safe from the accidental disclosures as well. You might not accidentally, unpurposefully or purposefully give your important data to someone else that includes your information. And how you can protect your data, I have already discussed in the guidelines here. And what should not be happened with the data, those are 8 number of rules that I have explained you already in 8.2. I hope you are getting all of it. You can also notify me if there's any specific part you want me to repeat. Then in 8.2.3 is e-safety. Now, e-safety is mostly refers to the benefits, risk, and responsibilities when using computer or when working with ICT. It is often defined to be the safe and responsible use of technology. However, e-safety is mostly about user behavior. Like when using the internet, you should make sure that you are not roaming around or going on to non-trusted links. You should be only be using the when using the internet. You should make sure its benefits, risks, and responsibilities. Sending and receiving emails are also a part of that. Taking part in social media is also an example, and online gaming as well. Now, when I'm using the internet, the following is a list of precautions that should be taken to minimize the potential danger. First of all, I should only look for websites that are trusted, that have HTTPS, that have a padlock green symbol sign. Second is this says that we should only purchase items from the website that are secure or encrypted. Third one says that when using search engines, we should always make sure the device settings are set to safe search. Fourth one, which says that we should only use websites recommended by teachers or parents. The next one says that be careful what I am downloading and I make sure that it is not harmful. The last one says that I should remember to log out of sites when I have finished with them. These are when using the internet, sending and receiving emails. So the following list highlights some of the dangerous areas when sending and receiving emails as well, so that I should be really important to have an awareness of the risk when I am opening those emails. उन emails के अंदर ऐसा ना हो कि शायद कोई वायरस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मेरा डाटा, मेरा कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो सके। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर 8.1 में मैंने सबसे पहले आपसे ये डिस्कस किया कि मेरे पास फिजिकल सेफ्टी क्या होता है। सबसे पहले तो ये होगा कि मैं अपने जो हेल्थ है
मैं उसको सेव करूंगा ना वो कंप्यूटर यूज करते हुए, वो कौन कौन से एरियाज थे, इलेक्ट्रोक्यूशन था, इसके मैंने कॉसेस बताया, उससे बताया कि हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, फायर हैजर्ड था, ट्रिपिंग हैजर्ड था, पर्सनल इंजरी था। देन वी कंटिन्यूड विद द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स, दैट इज ए डीबीए। डीबीए में मैंने आपको बताया था कि आप डाटा को लॉफुली प्रोसेस करते हो, कलेक्ट करते हो, सारी चीज़ों से रोकते हो। फिर मैंने कुछ आपको लॉस बताए थे, फिर मैंने आपको गाइडलाइंस बताई, फिर मैंने आपको पर्सनल डाटा के बारे में बताया कि पर्सनल डाटा क्या होता है, कैसे होता है। एंड देन आई स्टार्टेड द ई सेफ्टी। ई सेफ्टी इज के जितने भी रिस्क हैं, बेनिफिट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कंप्यूटर की यूज़ करते हुए, आई शुड बी नोइंग ऑल ऑफ देम। जैसे कि इंटरनेट यूज़ करते हुए कौन कौन से प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए, वो मैंने बताया कि पैडलॉक साइन हो, परचेज आइटम्स जो आपके वेबसाइट से हो रहे हैं वो ट्रस्टेड हो, सर्च इंजन में यूटिलाइज कर रहा हूँ, सो दैट शुड ऑल्सो बी द प्रोटेक्टेड। आई शुड ओनली बी यूजिंग वेबसाइट्स दैट आर रिकमेंडेड बाय माई टीचर्स। कोई भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर मैं ना जाऊं दैट इज़ नॉट ट्रस्टेड, या मैं किसी की सुपरविजन में यूटिलाइज नहीं करूं इंटरनेट, सो दिस इज गोइंग टू टेक मी टू the places where viruses and malwares are most frequently found. Then, in your sending and receiving emails, we are also going to highlight some of the advantages and disadvantages as well. First of all, is that you only need to open the emails or attachments that are from the known sources. वो सिर्फ आपकी नोन सोर्सेज से होने चाहिए, जो जो ईमेल्स आप अपने पास ओपन कर रहे हो। यू शुड ऑल्सो मेक श्योर योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज़ एन इफेक्टिव ईमेल फीचरिंग के वो सारे वायरसेस और जो भी ऐसे ईमेल्स हैं उनको सेग्रीगेट करे और आपके पास सिर्फ यूजफुल ईमेल्स हो। थर्ड वन इज दैट बिफोर ओपनिंग एन ईमेल और रिप्लाइंग टू दैट, आई शुड ऑल्सो बी ओपन checking their website or email address as well, that what should be treated like this. The next one is that I should also be thinking carefully before replying to an email, and I should never include the name of my school, college, or personal data as well. I should never send photos of myself. I should be beware of the other scams as well. I should be protecting my email by using a password. I should be take care when forwarding emails as well, when manually typing emails as well. ऐसा ना हो कि वो email किसी और के पास चला जाए. I should avoid clicking on the hyperlinks as well. You understand hyperlinks? कभी कभार होता है ना, कोई लिंक लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे किसी और वेबसाइट पे लेके चला जाता है. This is to be known as your hyperlinks. I should unsubscribe the link at the bottom of the email, जिसके ऊपर I would feel like that if this email is coming to me again and again, and I should avoid using the CC or to box when sending multiple emails, because it is always a good idea to create emailing groups and put the name of the groups into the BCC box, but yes, we should send the but what it do is that in BCC box, in the to box, I put an email to send the email to yourself, and this will give you and your friend some protection because of the unauthorized acts. So when it comes to an email, first of all, आप अपने पास email open करोगे सिर्फ trusted source है. You should make sure that the one who is supplying you with your internet service उसने filter लगाया हुआ है या नहीं. So to protect you from viruses and malwares, and you should only reply to the emails that you know that are the persons are genuine. You should also check your email or websites that if you are having that email received from the company, and you should also think before replying to an email, and you should never send photos of yours. You should be beware of phishing and farming as well, and you should be protecting your email account with password. You should be careful when typing your emails, avoid clicking